Hey there, fellow explorers. This is me, Fat Salman. Welcome to your very own channel, Discover Karachi Now. Today I have decided to go to Bahria Town, Karachi. Our beloved neighbors have shifted there, and I am going to visit their house. Another neighbor of mine is accompanying me in this trip, and you must have seen a few glimpses of him in my former videos. We have crossed Millennium Mall, and now we are heading towards Big Road. At this point, we are exiting Rashid Minhas Road and we are going to join Shara Faisal. This over here are the remains of the track of Karachi Circular Railway, which used to be operated a long time back. I'm not sure why there's so much traffic over here today. It's not a common sight. The guy in the Land Cruiser must really be pissed out right now because considering the fact that this stranger in the rickshaw beside his car is putting on his dirty hands on his shiny car just for no reason at all. He surely deserves a standing ovation for being so tolerant. I mean, what's the point of touching somebody's car, man? Now, this is a common sight in Karachi. Whenever bikers see that there's a congestion on the road, they climb their bikes up on the footpath and then they make that footpath their road. Everybody is looking curiously to their right. I think they've spotted the reason for this congestion. Well, nothing that I can see. Okay, now, so let me add one thing over here, that there are two routes that can be used so as to go to Bahria Town from Karachi. I have once gone to Bahria Town in my life, and it was through the National Highway. At that time, I had gone through a car. According to my knowledge, bikes are not allowed on the National Highway. That is why we are using the super highway. The route of going to Bahria Town through National Highway is quite simple. It's just a straight road that will lead you up to Bahria Town. But when you use the super highway, that is quite a complicated route. While riding the motorcycle, I couldn't really concentrate properly on the maps, that is why we went a bit out of route. Now we have taken back a turn and now we are going through Saudabad. Now that, my friend, is quite a unique sight in Karachi. Seems like a truck cum rickshaw. I think I have spotted a PSO pump. My bike had been using the reserve section of the petrol tank since we have left. Now we are getting to see quite unique things in this part of Karachi. Unique rickshaws, unique petrol pumps, and who knows what else. चलाने थोड़ी सी चलाने दे दे, बोर हो रहा हूँ मैं। तुम एंजॉय करो रास्ता। अरे रास्ता नहीं एंजॉय हो रहा, मैं थक गया हूँ, मुझे भी चलानी है। Once again we have missed a turn and now we are going back, going on the wrong side for a few meters so as to get back on track what the map is guiding us. We have come quite ahead, but I don't think that this track is gonna lead us to some road. झील नदी के उस तरफ जाने का रास्ता कहाँ से? सर ये पुल क्रॉस करेंगे ना आप, हाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक रोड सीधा जा रहा है, एक इस तरफ मुड़ रहा है। अच्छा जी सर।
तो वहीं से ना आप सीधा चले जाएंगे फिर उधर मलिक टेंट वाली साइड पे। ये ऊपर से जा रहा है रोड, ये टैंकी है ना, टैंकी के हाँ। रोड जा रहा है, पका पका रोड है। ये नदी क्रॉस करने का नहीं हाँ, है। ये पुराना था, या मैप पे आ रहे हैं ना। हाँ। वो पुराना रास्ता है सर, असल लोग भूल जाते हैं। सही है। जी सर। ये कौन सा इलाका कहलाता है? ये खोखरा पार नदी किनारा। खोखरा पार है ये। जी सर। चल, ये पैसे बेचने की है? नहीं, ये भाड़े वालों की है। और ये जो गाय वाय खड़ी है वो बेचने की है? नहीं, बेचने की ये नहीं, ये बेचने का टोटल है। वो अलग फार्म बने होते हैं बेचने वाले को अलग। शुक्रिया। Well, that was hell of an experience. Now this here is a football ground and I think there's a match going on. There's a huge crowd that has come to see the match of whichever teams are playing over here. Apparently this is Murad Memon Goth according to the Google Maps, and this is completely a rural area of Karachi. Have a look over here. What sort of farms are over here? This looks like a coconut farm. I haven't gone outside of Karachi much, but the few times I have gone, there used to be such type of markets in rural areas, in the villages outside in Sindh and Punjab, etc. Have a look around these farms. It's hard to believe that all these places lie inside of Karachi. I've been seeing this place on the map since a few minutes, and its name is Mai Niyani Dargah. I'm not sure this is a Muslim place or is this a Hindu place. Let's go ahead and explore it. Judging from this place of ablution, seems like a Muslim spot. ये पानी साफ है? हाँ, पानी कहाँ का पानी है ये? दरिया सिंध का पानी है? नहीं, फिर बारिश का पानी आता है ना पीछे से, मतलब बलूचिस्तान से। अच्छा, बलूचिस्तान से आ रहा है। ये वही पानी, ये सारा पानी मिलकर नई में आते यहाँ आता है। तो यही से पानी सीवी में जाता। अच्छा, सीयू में निकलता है। तो ये तो उस तरफ जा रहा है। नहीं, कराची तो उस तरफ है। ये उस तरफ से आया है, इस तरफ से आया। अच्छा, हवा है ना, बड़ा रेला आया होगा ना, बड़ा रेला, तो वो निकल चुका होगा अब कम तक। हो गया, वो कम हो गया है। अभी जो है ना रुक गया, इधर रुक गया है। अभी हम मेमनों में जो है ना मुश्किलात पैदा होगी अगर बाढ़ ये तेज आई तो। हाँ, क्यों? ये गहराई तो है। गहराई तो है, नहीं मतलब उसका पेट बड़ा है। हाँ, नीचे जो है ना वो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, मतलब गहरा है ये। हाँ, मतलब जो पानी जमा है उसके ऊपर चल के नहीं जा सकते। चल तो सकते हो, हाँ। ठीक है, इतना पानी बड़ा नहीं है। जब हाँ। पीछे से बाढ़ आएगी हाँ, तब जाहिर है, तब पानी जो है ना ऊपर चढ़ेगा, ऊपर तक चढ़ जाएगा। हाँ। इतना आएगा? इतना आएगा। अभी कितना आया था? अगर यहाँ पे डंपर वगैरह चले, चावल चला, मट्टी वगैरह निकाली तो नदी ऊपर नहीं चढ़ी, क्योंकि अब तो अभी तो जो है ना वो खासी गहराई है। अभी वो बंद हो गया है ना। जो दिक्का पहले चलता था। क्या चलता था? दिक्का जो मतलब रेत में निकालते थे यहाँ से मट्टी। अच्छा, यहाँ से निकाल के कहीं और पे स्टोर करते थे, अब वो बंद हो गया। अच्छा। अगर यहाँ से दरिया तक जाना हो क्या करें?
यहाँ से अगर अभी सीधा जाना हो क्या करें? यहाँ से जा ही नहीं सकते, तो काटे पड़े हैं। यहाँ पे और क्या क्या सांप वाप होते हैं? नहीं 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 होते होंगे, नहीं नहीं, आबादी कम है। यहाँ पे सांप वाम का जिक्र ही नहीं है भाई, जरूरी की चीज की। ये तो भाई दरबार है ना, किसका दरबार है? देवियों का, मतलब लीजियाँ पड़ी हुई, क्या मतलब? जो साईं की जो साहिबजादियाँ होती है ना, अच्छा, माई नियानी। तो मुसलमानों का है या हिंदुओं का है? मुसलमानों का है, तो मुसलमान ही आते हैं, कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि मुसलमान सिर्फ आए, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, दरगाह जो है ना अल्लाह के वलियों की है, सही। ठीक है। अब वहाँ पे अगर किसी के भी दिल की मुराद होती है, या मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ दरबार पे, आप आ सकते हैं। हाँ। जरूरी नहीं है आप अगले वाला बंदा मुसलमान हो, हिंदू हो, मस्जिद भी है? क्रिश्चियन हो, कोई भी। मस्जिद भी है, नमाज भी पढ़ सकते हैं? हाँ कहाँ पे? मस्जिद पर बराबर में सही। ये मस्जिद है, ग्रीन वाली? मस्जिद है, ये देखो कहाँ है। सही है। What the heck? We have now entered National Highway, and I can see bikes on both sides of the road. That means we could have easily used the National Highway to come to Bahria Town. Now I'm surely gonna use this route on the way back. So we have finally reached Bahria Town, and now let's enter like a pro. Motorcycle with no helmet not allowed. It seems as if we have entered the United Arab Emirates. Unlike other parts of Karachi, which are places for not even an animal to live, Bahria Town is a place where humans are worthy to live. With smooth and clean roads, Bahria Town is a properly planned city. Now we have finally reached our destination, and our vlog has almost come to an end. Now we are en route to Karachi, cruising the smooth and empty roads of Bahria Town, 12 o'clock midnight. कहाँ पे रहे? गाड़ी कागजात है? नहीं अभी नहीं है, लेकिन फोन के अंदर है। Now that was a good job done by the security agencies of Bahria Town. They stopped us and checked whether we are carrying the documents of our vehicle.
Before the end of this video, I would like to apologize to all of you watching this video regarding the voice quality of all of my videos. As you guys are cognizant that I am a beginner right now, and it is going to take a while to get the hang of it. We have finally reached Karachi, and thank you for staying with us for such a long vlog. Thanks for watching our videos. Please do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Goodbye.